Hello students, once again I welcome in this session myself Nityanand Mishra. Today we are going to discuss the physics of class 11th. Here we discuss the numerical problem of errors. Problem number 1 is the resistance R is equals to V by I, where V is equals to 100 plus minus 5 volt and I is equals to 100 plus minus 0.2 ampere. Find the percentage error. इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए I will provide a link of the previous topics in the description box that will help you. First see this video which is given in the description box, and then you can easily understand the numerical problems. So solution of problem number 1 is here given R is equals to V by I. Here the error resistance is depend upon V and I. So delta R by R is equal to delta V by I, delta V by V plus delta I by I. Here we find the percentage error. So we multiply this term, delta R by R into 100 is equals to delta V by V into 100 plus delta I by I into 100 is equal to, value put करेंगे, delta V, this is delta V and this is V, तो 5 by 100 into 100 plus delta I, this is delta I, this is delta I upon I into 100. By solving this you get 5 plus 2 is equals to 7%. 7% is your answer. In next numerical problem, the resistance of a resistance R1 is equals to 100 plus minus 3 ohm and R2 is equals to 200 plus minus 4 ohm and are connected in series and parallel. Find the equivalent resistance, find the error in equivalent resistance in series को R dash is equals to R1 plus R2 के मेथड से, and the parallel one is solved by the 1 upon R dash is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Here solution of first part, R dash is equals to R1 plus R2. This is solution of series. So R plus delta R dash, इसे यही आपको फाइंड करना, इज इक्वल्स टू R1 प्लस डेल्टा R1 डैश प्लस R2 plus delta R2 dash. The values are given. This is 100 plus minus 3 and this is 200 plus minus 4. This is equals to 300 plus minus, ये ऐड हो जाएगा आपका 7 ohms.
वैल्यू आ गई R प्लस डेल्टा R डैश। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल 1 by R dash is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. This implies that इसको सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 10th जैसे राइट करते थे 1 by R is equals to R1 R2 upon R1 plus R2 that is equal to वैल्यूज पुट कर दीजिए। दिस इज R1 and this is R2. This is R1 and this is R2. Is equals to cancel out, this comes 66.7 ohms. This is the value of equivalent resistance in parallel. Now we find the value of error. So the term is given here, delta R upon R1 square is equals to delta R1 upon R1 square plus delta R2 upon R2 square. What is the process to find out this term? I will derive here how you find this term. You know 1 by R dash is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. In this term, here R dash is equals to the equivalent resistance in a parallel, and R1 is the value of first resistance and R2 is the value of second resistance. Multiply both side by डेल्टा। इसको हम दोनों साइड में डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू गेट डेल्टा अपॉन R dash is equals to delta upon R1 plus delta upon R2. Here delta is converted into del. डेल्टा को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे? del. This is the sign of partial differentiation. Here delta is converted in del. Del 1 del upon R1 is equals to del upon R1. Del upon R dash is equals to del upon R1 plus del upon R2. Now we multiply and divide by the sum term. इसको हम del R dash से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड बाई del R dash. सेम थिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम थिंग से डिवाइड करेंगे. इसको क्या करेंगे? 1 अपॉन यहां पर सेम ऐसे ही del R1 से डिवाइड किया, del R1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय द del R2 into del R2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. देखिए इसमें क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में इस टॉपिक को हम सॉल्व कर रहे हैं, एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. अभी मैं आपको उसका प्रोसेस बताऊंगा. इन दिस केस दिस इज कन्वर्टेड del अपॉन del R dash and 1 upon R
dash into del r dash is equals to del upon del r1 1 by r1 into del r1 plus 1 by del r2 1 by r2 into del r2. In this case डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा कि d by dx of x की पावर n. Here d by dx is called differentiation coefficient of differentiation and x of power n is a function. Here we differentiate x of power 1, we get n x की पावर n minus 1. जो इसकी पावर होती है वो कोफिशिएंट बन जाता है और जो पावर होती कोफिशिएंट बन जाता एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड इन द पावर. एग्जांपल x ऑफ पावर 2 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 2x ऑफ पावर 2 minus 1 दैट इज इक्वल्स टू 2x 2 minus 1 1 राइट. तो इस तरीके से इन दिस केस del upon del r1 is equals to r1 half power minus 1 del r1 is equals to del upon del r1. यह आपका r डैश है, ये 1 है. r1 ऑफ पावर minus 1 del r1 प्लस del upon del r2 ऑफ पावर minus 1 del r2. देखिए बेटा यहां पर पावर क्या है -1, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 पावर है वो कोफिशिएंट बन करके क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी. एंड r डैश -1 एंड -1 पावर है और -1 फॉर्मूला में करेंगे देन इट बिकम्स r डैश ऑफ पावर -2 इंटू del r डैश इज इक्वल टू सेम ऐसे ही -1 r1 ऑफ पावर -2 del r1 हो जाएगा माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस r2 ऑफ पावर -2 अपॉन में नहीं del r2. इस तरीके से टर्म हो जाए, इसका माइनस ये माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे. ये पावर -2 है, ये नीचे आ जाएगी. देन इट बिकम del r डैश अपॉन del r डैश अपॉन r डैश ऑफ पावर 2 इज इक्वल टू del r1 अपॉन r1 की पावर 2 प्लस del r2 अपॉन r2 की पावर 2. Here delta is converted in del and in this system del is converted into delta. Then delta r1 अपॉन ये r डैश है, r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 square. This is a process to find out this relation. This is a process to find out this relation, and by finding this relation we solve the question by the method. We change delta r dash is equal to
delta R1 upon R1 square into R dash of square plus R dash of square upon delta R2 upon R2 of square. Look here, R dash. Here you can find the R dash. R dash is equals to 66.7. This is also square. R1 is 100. Square of this term into delta R1. Delta R1 is 3 plus R dash 66.7 upon R2 is 200. R2 is 200 of whole square into delta R2. Delta R2 is 4. When you solve this mathematical term, you get answer 1.8. You get answer 1.8. So final answer of the second part is R dash plus delta R dash is equal to 66.7 ohms plus minus 1.8 ohms. This is the first numerical which have some techniques. So at least see this question 2 times and tell me how you feel about this session. Thanks for watching.